Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are discussing about the topic of parathyroid gland. Parathyroid gland are basically four tiny glands which are situated on the posterior surface of the thyroid gland. On the posterior surface of thyroid gland, you can see here there is a superior parathyroid gland, then there is inferior parathyroid gland. This superior parathyroid gland and inferior parathyroid gland is basically present on the posterior surface of thyroid gland. तो जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो फोर तीन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. These glands are basically the parathyroid gland. Parathyroid gland basically secretes a hormone which is parathormone. And the source of secretion is the chief cells of the parathyroid gland. Parathyroid gland is basically has two types of cells, and in which one type of cell is the chief cell, and this chief cells basically secrete the PTH and the parathormone. The chemistry is of this hormone is basically the protein in nature. जो हार्मोन की नेचर है, केमिकल नेचर है, वो प्रोटीन नेचर है. And the half-life of this hormone is 10 minutes. And the normal plasma level of PTH and the parathormone is basically the 1.5 to 5.5 milligram per deciliter. What are basically the function of the parathormone? Parathormone has some main role in the maintaining and balancing of the calcium level in the blood. It can also control the phosphate level in the blood. अब हमने ये देखते हैं कि किस तरह से जो पैराथॉर्मोन है ये कंट्रोल करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर. तो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए पैराथॉर्मोन एक्ट करेगा बोन पे, एक्ट करेगा किडनी पे, एक्ट करेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. इन 3 ऑर्गन से एक्ट करने के बाद कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या करता है, ये हार्मोन मेंटेन करता है. तो बेसिक फंक्शन क्या हो गया, कैल्शियम के लेवल की मेंटेनेंस है और साथ में फॉस्फेट के लेवल की भी मेंटेनेंस है. अब पैराथॉर्मोन बेसिकली कैल्शियम के लेवल को किस तरह से मेंटेन करता है, ये रिजॉर्प्शन करता है किसी की बोन की. जब ये बोन की रिजॉर्प्शन करेगा बाय एक्टिंग ऑन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन, so the level of calcium is maintained in the blood. अब जो ये रिजॉर्प्शन के प्रोसेस हैं बोन की, ये दो तरह के हैं. एक इसमें रैपिड फेज है और एक इसमें स्लो फेज है. रैपिड फेज मीन कि जैसे ही कैल्शियम जो है वो जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होता है ग्लैंड से, इट विल एक्ट ऑन द बोन एंड विल कॉज द एक्शन which is in the form of resorption of the bone, and this resorption will be the removal of calcium from the bone. So पैराथॉर्मोन बेसिकली क्या करेगा, अटैच करेगा रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर के साथ जो कि बोन के सेल ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट पे जो है वो प्रेजेंट होंगे. अब इन रिसेप्टर के साथ अटैच करने के बाद ये रिसेप्टर में जो रिसेप्टर के सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा. जैसे ही मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, साथ ही कैल्शियम के पंप भी ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है वो एक्सेलरेट करेगी ओस्टियोसाइट से और वो ब्लड प्लाज्मा की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएगी. So this is basically the rapid phase process in which the hormone is secreted and it immediately act on the bone and perform the resorption process of the bone. And the second process is the
slow process which is also on the bone. On the bone, in the slow process, basically the activation of osteoclast will occur in this process. How the osteoclast activation will occur? Basically, the hormone, when attached to the osteoclast receptors, it basically causes the activation of the osteoclast cell by releasing some substance such as the proteolytic enzyme, citric acid, and the lactic acid. So these lipolytic enzymes will increase in the osteoclast. When the osteoclast activation occurs, then this osteoclast will cause the resorption of the bone. As we already know, the basic function of the osteoclast is the resorption of the bone. So when this process will occur, calcium ion will enter into the blood from the bone. So parathyroid basically increase the calcium resorption by bone by stimulating the proliferation of the osteoclast. Through the process of the proliferation of the osteoclast, different type of enzyme will be secreted, and this secreted lysosomal enzyme will cause a breakdown and cut down of the bone, and the calcium will be become the part of the blood. तो बोन के ऊपर जो इसका हमने एक्शन देखा है ब्रेथ हार्मोन का, दैट वाज द स्लो फेज एंड द रैपिड फेज. और इन द स्लो फेज बेसिकली क्या हुआ है कि जितना भी ओस्टियोक्लास्ट बोन के अंदर प्रेजेंट थे जो कि रिजॉर्प्टिव जो है वो प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, रिजॉर्प्शन का जो है वो बाइस करते हैं. तो उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर के साथ हार्मोन अटैच हुआ, उसकी एक्टिवेशन के साथ उसके जितने भी लाइटिक एंजाइम थे जो कि लाइसिस करते हैं, दैट विल इंक्रीज. जैसे ही ये इंक्रीज होंगे तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो अपनी एक्टिविटी जो कि उसका एक्टिवेशन की रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन है उसको परफॉर्म करेगा. तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है, देन परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्टिविटी को, तो इट विल टेक टाइम. So this process is basically this process of the activation of the bone of the growth hormone is under the slow phase process, because first osteoclast will activate, then it will cause the resorption of the bone and the removal of the calcium from the bone, and this calcium then become the part of the blood. While in the rapid phase, we see only the growth hormone attached to the cell receptor, proliferation of the membrane will occur, and the calcium ions will move from the cell and become the part of the blood. So, what are basically the action of the growth hormone on the kidney? On the kidney, if the level of the calcium in the blood is low, then on the kidney, growth hormone will attach to the receptor and cause the reabsorption of calcium from the renal tissue. And this reabsorption will occur on the proximal convoluted tubules and the collecting duct. So collecting duct जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स की जितने भी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं या नेफ्रॉन जो हमारी किडनी में प्रेजेंट है उसकी कलेक्टिंग डक्ट है, उसके ऊपर एक्ट करके जो पैराथ हार्मोन है वो रीअब्सॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम की ब्लड के अंदर. सेकेंड जो इसका प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ द 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल. जो 120 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल है, it will also form in the kidney through the parathyroid. So what is basically the action of the 125 dihydroxycholecalciferol, which is produced in the kidney by the growth hormone. When this 125 dihydroxycholecalciferol is produced in the kidney through blood, it will go into the intestine, and the intestine it will cause the
absorption of calcium. तो बेसिकली किडनी पे जो पैराथ हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, एक तो वो रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है कैल्शियम की, और सेकंड जो है वो कहाँ से, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल से, और जो उसकी आप कह लें कि डिस्टल जो है वो कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स हैं, और जो कलेक्टिंग डक्ट है। तो इन तीन जगहों पे एक्ट करके इसने क्या करवाया है, रीअब्सॉर्प्शन कराई है कैल्शियम की। The second is the formation of the 125 dihydroxycholecalciferol in the kidney. अब हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये जैसे ही प्रोड्यूस होता है, ये 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल जो कि एक्टिवेटेड विटामिन D3 है, ये फॉर्म होगा किडनी में पैरेथ हार्मोन की वजह से, और ये ब्लड के थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और इंटेस्टाइन में कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन कराएगा। So here how the inactivated vitamin D is converted into the activated vitamin D, क्योंकि इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए हमें जो विटामिन डी है उसका एक्टिवेटेड फॉर्म में होना मस्ट है। अगर ये जो विटामिन डी है जो कि हमारी स्किन में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो पड़ी होती है, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और ये जो कन्वर्जन है ये डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो कन्वर्जन हो रही है। अब जो हमारे पास 7 डी हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है, 7 डी हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल इज बेसिकली प्रेजेंट इन द स्किन. It is converted in the presence of the UV light and it is converted into the cholecalciferol. स्किन पे जब अल्ट्रावायलेट या सन रेज पड़ती हैं तो इसके वजूदी में जो हमारी स्किन में 7 डी हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है, ये कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल में। अब ये कोलीकैल्सिफेरॉल जो कि कन्वर्ट हुआ है स्किन में, ये ब्लड का पार्ट बनेगा, और ब्लड के पार्ट बनते ही इट विल बी गो इनटू द लीवर। अब टू सम एक्सटेंट कोलीकैल्सिफेरॉल हमारी डाइट से भी आ रहा होता है। अब डाइट से कोलीकैल्सिफेरॉल और जो हमारी स्किन से कोलीकैल्सिफेरॉल अब्सॉर्ब हुआ था, it will go into the liver and it will convert it into 25 hydroxycholecalciferol. अब जो स्किन से इनएक्टिवेटेड विटामिन D3 था, उसके प्रोसेस को हम देख लेंगे किस तरह से एक्टिवेट हुआ है। अब लिवर में जो कन्वर्शन हुई है 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल की, अब ये पैरेथ हार्मोन की प्रेजेंस में और 1 अल्फा हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में किडनी में पैरेथ हार्मोन की प्रेजेंस में ये 125 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल 125 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो गया है, डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। इसके साथ ही 24 और 25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल भी बन रहे हैं, बट वी हैव द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। तो पैरेथ हार्मोन ने किडनी में और किस तरह से एक्ट किया है, कलेक्टिंग डक्ट से कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाया है, और साथ में 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल की प्रिपरेशन। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल ये वो सब्सटेंस है जो कि एक्टिवेटेड विटामिन D3 है, और ये एक्टिवेटेड विटामिन D3 इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम मौजूद है वो 125 और एक्टिवेटेड विटामिन D3 की एब्सेंस में नहीं अब्सॉर्ब हो सकती, इसकी प्रेजेंस का होना मस्ट है, ठीक है। इसी तरह से हमने जब कैल्शियम के पैरेथ हार्मोन की जो है वो रोल की बात की थी, तो हमने बोन में बात की है, हमने किडनी में बात की है, इसके साथ ही हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी बात करेंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इसका जो एक्शन है पैरेथ हार्मोन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इन द किडनी and this vitamin in turn increase the absorption of the calcium from the GIT. So जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे इसका GIT पे एक्शन है that will be in the form of indirect way, not direct way.
क्योंकि किडनी में जो है वो पैराथ हार्मोन ने एक्ट करके 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन की है और यही 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल will act on the GIT and will cause the reabsorption of calcium from the GIT tract. ओके अगेन जो है वो सिस्टमेटिक डायग्राम जो है वो डिफरेंट किस तरह से इनएक्टिवेटेड विटामिन D3 जो है वो एक्टिवेट होता है और कौन कौन से ऐसे जो है वो प्रोसेस जो इसमें दिखाए हुए हैं, जैसे कि स्किन में 70 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल सनलाइट से कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ है जो कि इनएक्टिवेटेड विटामिन D3 है और ये इनएक्टिवेटेड विटामिन D3 लिवर में जाके 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ है or 25 hydroxycholecalciferol is converted in the kidney in the presence of the Parath hormone, and Parath hormone will convert it into the 125 dihydroxycholecalciferol. And this 125 dihydroxycholecalciferol will go toward the intestine and will cause the absorption of calcium and make the part of calcium to the blood. तो किस तरह से विटामिन D3 की कन्वर्जन हुई स्किन में, लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, स्किन में सनलाइट ने 7 डाइहाइड्रोक्सी को कोलिकैल्सिफेरॉल में विटामिन D3 में कन्वर्ट किया जो कि एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी। फिर लिवर में यही कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ और फिर पैराथ हार्मोन ने किडनी में 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को में कन्वर्ट किया जो कि एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 थी और यही एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इंटेस्टाइन के लेवल पे जो है वो ब्लड के थ्रू रीच किया है और वहां पर जो है वो 125 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल ने कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन कराई है। तो बेसिकली हम रोल देख रहे थे पैराथ हार्मोन का कि वो किस तरह से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है बाय एक्टिंग ऑन द बोन, बाय एक्टिंग ऑन द किडनी, बाय एक्टिंग ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। So, what are the factors which will cause the regulation of the PTH secretions and the growth hormone secretion? That is basically the role of main factor is basically the calcium. If the level of the calcium in the body in the blood will decrease, then the PTH hormone will be secreted away from the gland. The blood phosphate level is also regulated by the parath hormone secretion. How? Okay, here is again the diagram which will which will telling about how the regulation of the calcium will take place. When the blood level calcium is decreased, then the parath hormone secretion will increase, and this hormone will act on the bone, kidney, and intestine, and the plasma calcium level will increase. So, how the phosphate level is maintained? Phosphate along with calcium reabsorption, PTH also increase the phosphate absorption from bone. As calcium resorption, PTH also increase the phosphate absorption from the bone. So PTH decreases blood level of phosphate by increasing its urine excretion. It also acts on the bone and the GIT tract. So if we see on the bone along with the calcium resorption, PTH also increase the phosphate absorption from the bone. On the kidney, phos- phosphate phosphateric action is basically affected by the PTH, and the PTH will cause the excretion of the phosphate through urine.
PTH will also increase the phosphate excretion by inhibiting the reabsorption of the phosphate from the renal tubule. It mainly acts on the proximal convoluted tubule. So in this, basically, we are discussing about how the level of the phosphate is maintained. On the GIT track, if we're talking about the GIT, the parathormone basically will cause increase the absorption of the phosphate from GIT through calciferol. So these are basically the mechanism in which the phosphate level in the blood is maintained, and PTH basically parathormone decrease the blood level of phosphate by increasing its urinary excretion and also by acting on the kidney. तो हम जो फॉस्फेट का लेवल है उसको हमने किस तरह से देखा है कि फॉस्फेट की लेवल को जो है वो पैराथॉर्मोन बेसिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही कैल्शियम की रिजॉर्प्शन हो रही होती है तो साथ में जो है वो पैराथॉर्मोन जो है वो अब्सॉर्प्शन कराता है फॉस्फेट की फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम किडनी में बात करते हैं तो किडनी में ये फॉस्फेट के लेवल को एक्सक्रीट करा रहा है, ना कि रीअब्सॉर्ब करा रहा है, जैसे कि पैराथॉर्मोन रीअब्सॉर्ब करा रहा था कैल्शियम को। अगर हम जीआईटी ट्रैक में देखते हैं तो जीआईटी ट्रैक में बेसिकली पैराथॉर्मोन इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट थ्रू कैल्सिटरॉल। ठीक है, तो जीआईटी ट्रैक में जो है ये फॉस्फेट के लेवल को अब्सॉर्ब करा रहा है। Now we are discussing about the applied physiology and the disorder of the parathyroid gland. There will be two conditions that will be the hypoparathyroidism and the hyperparathyroidism. So in the hypoparathyroidism, there will be decrease in the calcium level and the calcium secretion. And what are basically the causes of the hypoparathyroidism? That may be the surgical removal of the parathyroid gland, which is known as parathyroidectomy, and the removal of the parathyroid gland during the surgical removal of the thyroid gland, autoimmune disease, and the deficiency for receptor of the PTH in the target gland. तो इसमें जो हमारे डॉट को डिस्कस कर रहे हैं, दे आर टेलिंग अबाउट कि किस तरह से hypoparathyroidism, decrease in the secretion of the parathyroid hormone or parathormone basically cause the hypocalcemia. And what are basically the causes of the hypoparathyroidism? अगर आपने surgical removal हो गया parathyroid gland का, then there which will be in the parathyroidectomy, तो parathyroid hormone जो है वो decrease कर जाएगा, पैराथॉर्मोन विल डिक्रीज। अगर जो है वो हमने थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करा दिया है, सर्जिकल थायरोइडेक्टमी करवाई है, तो उसमें भी क्या हुआ कि साथ में पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज कर जाएंगी। कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है जिसकी वजह से जो है वो पैराथायराइड हार्मोन इफेक्ट हुआ है, और या तो वैसे रिसेप्टर जो कि पीटीएच के थे वो टारगेट सेल के ऊपर उनकी डेफिशिएंसी हो गई। So these are four factors will cause the hypoparathyroidism, और यही वो फोर फैक्टर्स हैं जो कि क्या करवाते हैं, हाइपोकैल्सीमिया करवा रहे हैं। Now when the level of the calcium in the blood is decreased, then what are basically the factors, what are basically the disease which will occur? So hypocalcemia basically will cause the hypocalcemia tetani, and this is basically the abnormal condition which is characterized by painful muscular spasms. Commonly, it will occur in the feet and hands, and it is basically the hyperexcitability of the nerves and the skeletal muscle due to the calcium deficiency. There is sign and symptoms of the hypocalcemia tetani. These sign and symptoms are basically the hyperreflexia and convulsions, and the carpopedal spasm. Carpopedal spasm basically the flexion at the wrist joint. इसमें जैसे आप इसके कॉर्नर पे भी आपको नजर आ रहा होगा, एक तो मस्कुलर की एक्साइटेबिलिटी है ना, हाइपर एक्टिविटी मसल्स की हो जाती है,
जिसे हम हाइपर रेफ्लेक्सिया एंड कन्वर्जेंस कह रहे हैं। क्योंकि कैल्शियम जो है वो न्यूरॉन्स के लेवल को न्यूरो बेसिकली जो कैल्शियम का रोल अगर हम देखते हैं, कैल्शियम जो है वो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो है वो बहुत अहम रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। कैल्शियम की जो प्रेजेंस है, अगर कैल्शियम की जो है वो प्रेजेंस होगी तो उससे मसल जो है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं। अब अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया है तो हाइपोकैल्सीमिया जो है वो मसल में क्या कर रही है, हाइपर एक्टिविटी कर रही है। अब मसल्स बेसिकली न्यूरॉन्स के साथ जो है वो अटैच है, तो इन न्यूरॉन्स बेसिकली मसल्स को एक्साइट करते हैं, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन का बाइस बनते हैं। उनके सेंटर में जो एक आप कह रहे हैं कि क्लेफ्ट बनता है, न्यूरो मस्कुलर क्लेफ्ट जो बनता है वो साइनेप्स बनता है, जिसे उस साइनेप्स में जो है वो कैल्शियम आयंस का जो है वो ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए मस्ट जो है वो जरूरी है कैल्शियम, ताकि वो अपनी जो न्यूरॉन्स की मस्कुलर एक्टिविटी है उसको ट्रांसफर कर सके मसल में। So the muscular portion is basically affected in the hypocalcemic stage, and there will be also the carpopedial space. जो कार्पोपीडियल स्पेस है उसके जितने भी एटीट्यूड और जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लेक्शन है एट द जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द metacarpopharyngeal joints and extension at the interpharyngeal joint and adduction of the thumb. एडक्शन मीन के थंब जो है वो सेंट्रल लाइन की तरफ मूव कर जाना, एक्सटेंशन मीन के उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में, जैसे आप देखते हैं कि जो फेरेंशियल जो हाथ के जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें थोड़ी सी जो है वो इंटरफिलेंजियल जो फेलेंजीज हैं, जो हमारे फिंगर्स के जितने भी आप कह लें बोन्स हैं जिन्हें हम फ्लेंजीज जो है वो कहते हैं, तो इंटरफिलेंजियल जॉइंट की जो है वो एक्सटेंशन हो गई है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट। फ्लेक्शन मीन के जो इसकी मूवमेंट है आपको हाथ की दिखाई दे रही होगी, एक डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट दो शेप दिखाई गई है, तो वो जो फ्लेक्शन है दैट विल बी दिस। तो ये सारी कंडीशन जो है वो कार्पोपेडियल जो है वो स्पेस होती है, और ये कार्पोपोडियल स्पेस बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया जो है वो टेक्नाई में जो है वो होगा। इसके साथ ही देयर विल बी द लेरेंजियल स्ट्राइडल्स। लेरेंजियल जो है वो पोर्शन इज बेसिकली मोर जो है वो important for the process of the breathing. If the hypocalcemia will occur, then there will be the dangerous जो है feature of the hypocalcemia tetani है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर जो है वो चेंजेस भी आ रही होती हैं। कार्डियोवास्कुलर में डायलेशन ऑफ द हार्ट है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द ST segment and the QT interval in the ECG। ST अगर आपने ECG की देखा हो तो उसके अंदर ST और QT दैट विल बी द डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो सिस्टोलिक एंड डिफरेंट जो है वो कंडीशन इनको दी होती है। इसका पूरा एक जो है वो डायग्राम है ECG के ऊपर जो मेंशन होती है। ECG की रिपोर्ट्स भी अगर आपने देखी है तो उसके ऊपर भी जो है वो ST और QT की जो है वो डिफरेंट जो है वो राइज एंड फॉल्स होते हैं। तो अब उसका जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा इस कंडीशन में। एरिथमिया है, हाइपोटेंशन है, हार्ट फेलियर है, उसके डिफरेंट जो है वो रीजंस हो सकती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर जो है वो चेंजेस में हाइपोकैल्सीमिया जो है वो ये रोल प्ले कर रहा है। देन देयर इज द हाइपरथायराइडिज्म एंड द hyperparathyroidism and the hypercalcemia. Hypercalcemia basically of three types, that may be primary, secondary, and the tertiary. And the primary will be due to the development of the tumor, and the secondary may be due to physiological compensatory hypertrophy, that may be increase in the number of the cells of the parathyroid gland, and the tertiary hyperparathyroidism may be due to hyperplasia, that may be in hypertrophy is increase in the size of the cell, and hyperplasia is increase in the number of the parathyroid hormone cells. So these conditions will cause the increase in the hyperthyroidism, and this hyperthyroidism will cause a depression in the nervous system, sluggishness of the reflex activity, reduce the ST and QT intervals in the ECG, lack of appetite, and constipation.
तो जो भी स्लगिशनेस की तरफ जितने भी प्रोसेस होंगे ये उनकी तरफ लेके जाता है. Okay, so these are all basically the parathyroid hormone gland and parathyroid hormone जो है वो applied physiology and how the parathyroid hormone will cause the maintenance of the calcium level in the blood. Hopefully you will understand with this lecture, inshallah. In the next lecture we will discuss about the next topic. Okay guys, Allah Hafiz.